Hello students, our next topic is define screen layout for asset master data. You can control the screen layout for asset master data by making the fields as required entry, optional entry, display entry, copy field, value, option, etc. The screen layout control contains the specification for the field groups in the asset master record. You enter the screen layout control in the asset class. This method allows you to structure the master record individually for each asset class. SAP delivers some sample definitions which you can use as a reference when formulating a more detailed structure for the asset master. For that we can go by path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Asset Accounting, Master Data, Screen Layout, Define Screen Layout for Asset Master Data. SAP में जाते हैं. SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, Organizational Structure, Assets Classes, Master Data, Screen Layout, and Define Screen Layout for Asset Master Data. Then double click on define screen layout for asset master data. Now click on position. Now enter your screen layout. Select layout. Then click on logical field groups. Now select posting information. यहाँ पर बहुत सारे लॉजिकल फील्ड ग्रुप्स हैं जिसमें से हमें कुछ फील्ड ग्रुप्स डिफाइन करने हैं कि हमें कौन से फील्ड रिक्वायर्ड है. सो पोस्टिंग इंफॉर्मेशन और जनरल डेटा. Then click on field group rules. तो यहाँ पर हम लोग जनरल डेटा में जो भी फील्ड्स ग्रुप नेम्स हमें रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड करेंगे और जो नहीं चाहिए वो ऑप्शनल रखेंगे. देन हमारा जो मेन एसेट नंबर है वो हमें लगेगा, उसके अंदर जो सब एसेट्स होंगे वो हमें लगेंगे. एंड कॉपी मतलब अगर हमने एक एसेट को रेफरेंस देके दूसरा एसेट कॉपी कर रहे हैं तो उसके ग्रुप के साथ वो कॉपी होना चाहिए, इसलिए हमें ये तीनों ऑप्शन टिक रखने हैं. तो ये सारा सेटिंग्स हमें डिफाइन करना है. जो भी आपको फील्ड में जो जो रिक्वायर्ड है आप उसको क्लिक करके फील्ड ग्रुप में जाके असाइन कर सकते हैं. तो ये सब हमें डिफाइन करना है. ZTR1, ZTR2 जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं. जनरल डेटा. Okay, come back. ZTR3. Okay, come back. Come back. Now ZTR4. Then come back. Come back. ZTR5. Select your field and just check it. You have to set for all the layouts. Okay, now come back. Same we can assign screen layout for asset depreciation areas. So go to next step. So select
depreciation on main asset and sub asset. If we want to assign for main asset, then select 1000 and click on field group rules, and here depreciation key is required. Again same for main number, sub number and copy. Again come back and now select another one and then click on field group rules, and here also we want to assign only depreciation key, but rest of will set to optional. Then come back and lastly click on save button. Click on create request, enter your description, define screen layout for depreciation areas, and then save and then click on continue button.